Hello guys, hello everyone. Welcome to you on my YouTube channel Legal Bonafide. Today I am going to start the most important section of LLB entrance, that is the legal aptitude, and the topic is the Indian Contract Act or Law of Contract. So guys, first of all let's know about what is the law. Law is something which governs the behavior in a civilized society. कि हम सोसाइटी में क्या करते हैं, एक दूसरे से कैसा बिहेव करते हैं, एक दूसरे के प्रति क्या राइट्स हैं एंड एक दूसरे के प्रति क्या ड्यूटीज हैं. दैट इज़ द लॉ. सो नेक्स्ट इज द व्हाई वन शुड नो द लॉ. बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज. अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया और आप ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था कि मर्डर करने से फांसी हो सकती है, तो दैट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज. बट इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज कैन बी द एक्सक्यूज. मतलब ये कि अगर आपने किसी का सामान मिस्टेक से ले लिया एंड ऑनेस्टली बिलीविंग इट इज़ योर्स, देन यू हैव मेड इट मिस्टेक ऑफ द फैक्ट एंड दिस मिस्टेक इज ऑनेस्ट एंड रीजनेबल, so it is excusable. So in a nutshell we can say that the every person should have the knowledge of the law. So next is essential of contract. There are some essential components for a contract to be made. First is the offer. Offer comes under the section 2 subsection A of the Indian Contract Act. It means when one person signifies to another his willingness to do, कि हमने आपको कुछ ऑफर किया. नेक्स्ट इज द एक्सेप्टेंस. when the person to whom the proposal is made or offer is made signifies his assent, the proposal is said to be accepted. Next is the promise. When the offer is accepted, it becomes the promise. Okay. Next is the consideration. Consideration simply means something in return. It means some benefit, right? It may be interest or loss or profit. For example, let's take if A agrees to sell his car to B at the 1 lakh, here B's promise to pay 1 lakh is consideration to A's promise. If there is no consideration, there is no contract. Next is the agreement. Agreement comes under the section 2 subsection E. Every promise and set of promise forming consideration for each other is contract. And next is the contract. And an agreement enforceable by law is contract. And contract comes under the section 2 subsection H. Next is the all contract are the agreement, but not all agreement are the contract. This you have to. So let's know about the some key point which will definitely help you in solving the legal reasoning. First is the void agreement. Void agreement comes under section 2 subsection G of Indian Contract Act. An agreement not enforceable by law is the void. Next is the voidable contract. voidable contract मतलब इधर वो void हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता है. It is the option of the one party, one or more party. So an agreement is voidable contract if it is enforceable by law. क्योंकि ये contract बन चुका है तो ये enforceable by law होगा at the option of one or more parties. Okay. Next is the void contract. void contract means ये agreement बन चुका है, enforceable by law है. अगर ऐसा कुछ होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट सीसेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, मतलब कि वो जो है इन्फोर्सेबिलिटी उसकी जो है वो ख़त्म हो जाती है, वो कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड हो जाएगा. फिर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, दैट मीन्स वो वॉइड हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द कंसेंट. सो जब भी आप कोई ऑफ़र एक्सेप्ट करते हैं तो उसमें आपकी कंसेंट होती है एंड डेट कंसेंट शुड बी फ्री कंसेंट. अगर वो फ्री कंसेंट नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगी वो वॉइड हो जाएगी. तो फ्री कंसेंट क्या होता है? सो कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉल्ड बाय द coercion, undue influence, fraud,
मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। सो चलिए एक एक करके हम सबकी बात करते हैं। सबसे पहले आता है कोअर्जन। कोअर्जन कम्स अंडर द सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। व्हाट इज द कोअर्जन? कोअर्जन सिंपली मीन्स बाय फोर्स, मीन्स कि थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। अगर हम फोर्सफुली कुछ एग्रीमेंट साइन करवाते हैं तो डेट इज द कोअर्जन। नेक्स्ट इज द अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस कम्स अंडर द सेक्शन 16 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि डोमिनेटिंग द विल ऑफ अदर पर्सन, मतलब कि मौके का फ़ायदा उठाना सिंपली। नेक्स्ट इज द फ्रॉड। फ्रॉड कम्स अंडर द सेक्शन 17। फ्रॉड मीन्स आप लोगों को पता होगा क्या होता है, मीन्स कि फैक्ट रिप्रेजेंटेड विलफुल्ली विथ अ व्यू टू डिसीव अदर पार्टी, किसी को धोखा देना। उसके बाद नेक्स्ट आता है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 में आता है। व्हेन अ पार्टी असर्ट समथिंग विच इज नॉट ट्रू दो ही बिलीव्स टू बी, like the breach of the duty. Okay, that is the misrepresentation. And mistake comes under the section 20, 21 and 22 of the Indian Contract Act। क्या आपने मिस्टेक से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया? So now let's know about the some keywords of the Contract Act. First is the betting. What is the betting? Betting, we know that the betting is illegal. So betting is void. It is not an contract. When there is uncertainty in some contract, there is no agreement. That the party must agree on the same thing in same sense for a valid contract. Next is the bonded labor. What is the bonded labor? It is also banned in India. It is against the law in India. So no bond is valid for employment. Next is the caveat emptor. इट मीन्स बायर बी अवेयर। अगर आप कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं तो आपको अवेयर रहना है कि आपने क्या ले रहा है एंड उसके वैलिडिटी क्या है, आपको सारी चीज़ें देख के लेनी है। नेक्स्ट इज द कंसेंसस एड आइटम। इट मीन्स दैट द पार्टीज मस्ट एग्री और डिसएग्री ऑन सम फैक्ट। लाइक कि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं तो उसमें ऐसा होता है कि कुछ पॉइंट पे आप एग्री करते हैं, कुछ पॉइंट पे आप डिसएग्री करते हैं, तो डेट मस्ट बी देयर। इफ देर इज नो कंसेंसस एड आइटम देन द कंट्रैक्ट इज द वॉइड। नेक्स्ट इज द रेस्ट्रेंट। टू स्टॉप डूइंग फ्रॉम, टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो सिंपली इसका मतलब होता है कि किसी को कुछ करने से रोकना, रिस्ट्रेन। नाउ नेक्स्ट इज द वकालतनामा। वकालतनामा क्या होता है? वकालतनामा इज अ डॉक्यूमेंट बाय विच पार्टी ऑथराइजेज द एडवोकेट टू रिप्रेजेंट ऑन देयर बिहाफ। मतलब कि जब कोई पार्टी अपने एडवोकेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑथराइज करती है कोर्ट में। नेक्स्ट इज द क्वांटम मैरियट। क्वांटम मैरियट का मतलब ये हुआ है कि अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन ऑफ द वर्क डन दैट इज द कंपनसेशन अकॉर्डिंगली। दिस इज द इम्पोर्टेंट वर्ड यू शुड कीप इन माइंड। नेक्स्ट इज द टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट में क्या डिफरेंस होता है? वी हैव स्टडीड द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट वी विल स्टडी द लॉ ऑफ टॉर्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है वो दो लोगों के बीच में किया जाता है, दो पार्टी के बीच में किया जाता है। बट जो टॉर्ट होता है दैट इज द अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज। कॉन्ट्रैक्ट राइट इन रैम है एंड टॉर्ट जो है वो राइट इन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो राइट इन पर्सोनम है, मीन्स अगेंस्ट द स्पेसिफिक इंडिविजुअल। बट टॉर्ट जो है वो राइट इन रैम है, दैट मीन्स अगेंस्ट द होल वर्ल्ड एट लार्ज। नेक्स्ट इज द ग्रेचुटस एक्ट। ग्रेचुटस एक्ट का मतलब ये होता है कि एनी एक्ट डन फॉर द फ्री। नेक्स्ट इज द मैरिज ऑफ टू अनसाउंड माइंड पीपल। Marriage of two unsound mind people will be valid only with the consent of their guardians. Next important word is the novation, recession and alteration. Novation means the when old contract is substituted by the new contract. अगर कोई सब्स्टिट्यूट किया गया है किसी को हटा करके। रिसेशन मतलब होता है कि कैंसलेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
एंड अल्टरेशन में हम जानते हैं कि किसी को अल्टर करना मतलब किसी को मॉडिफाई करना. So alteration means modification of the terms of the contract. So this was your contract act. I hope I have provided you the required knowledge of contract act for LLB entrance. इससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है. I will be sharing the notes and case laws in WhatsApp groups. So link is given in the description. So thank you so much for watching this video. Stay safe, stay healthy.